Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. So today we're going to study about types of ethical issues. If we discuss in general perspective, so ethics can be defined as the moral principles for conducting an activity. These are the guidelines for responsibly conducting the research. All right. And these are the moral principles for conducting any sort of activity. It is not mandatory कि ये सिर्फ research के की activity में apply किए जाएं. It could be applied in any sort of activity. So in general, ethics are set of rules that govern our expectations of our own and others' behavior. ठीक है, हमारे अपना बिहेवियर एंड जिससे हम रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कोई एक्टिविटी कंडक्ट करवा रहे हैं, उसके भी जो है ना बिहेवियर्स पे काम करना. इट्स सिंपली द एथिक्स. इफ वी स्पेसिफाई इट, सो रिसर्च एथिक्स are the set of ethical guidelines. These are the set of regulations, these are set of rules that guides us on how scientific research should be conducted. किस तरीके से आप scientific research conduct करेंगे, ठीक है. So now these are the types of ethical issues. There are several ethical issues you should always pay attention to in your research design, and these issues can overlap with each other. So let's dive deep into it. Now, in today's lesson, I'm gonna just give you the general perspective. What are these? Only the general perspective, but in the coming session, I'll be picking only one. For example, voluntary participation. I'll pick this, and then I'll make the video. Okay? Or if I can explain the entire ethical issues in a coming upcoming video. Okay? So these are the just general ideas that you should be familiar with when conducting your research. All right. So the first one is voluntary participation. Voluntary participation. Your participants are free to opt in or out of the study at any point in time. ठीक है? So it simply says that you cannot bound your participants. ठीक है? जो भी आपके participants हैं, voluntary participation कर रहे हैं वो, ठीक है? They're free. They're extremely free टू विदड्रॉ. ठीक है, उनका कभी भी रिसर्च के स्टार्ट में, रिसर्च के मिडिल में और रिसर्च के एंड में, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे दे आर फ्री टू escape out from that situation. They are free to say no. All right, so this is the thing that you need to familiar with. You cannot bound someone कि आप आए करें और जो है उनको आप स्टिक कर दें, उनके ऊपर ये स्टिग्मा लगा दें कि आपको पार्टिसिपेशन करनी ही करनी है. ठीक है, so they are free. Now comes the informed consent. Informed consent. Participants know the purpose, benefits, risks and funding behind the study before they agree or decline to join. ठीक है, you should make them familiar with each and everything that mentioned here. You should tell them the purpose. ठीक है, what is the purpose of the research you're conducting. For example, you're conducting a research about multicultural classroom. ठीक है, so what is the purpose, what would be the benefit of this research. ठीक है, what would be the risks, क्या risk factors होंगे, ठीक है, क्या negative aspects होंगे इस research के, सब उनको inform करें. एंड देन फंडिंग. ठीक है, इसमें फंडिंग क्या हुई है, इसमें आपका बजट कितना खर्च हुआ है, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग आप उनको रिसर्च के स्टार्ट में ब्रीफ करें. ठीक है, इट शुडंट बी वेरी लॉन्ग एक्सप्लेनेशन. यू कैन जस्ट ब्रीफली टॉक अबाउट दीज थिंग्स. दीज आर द बेनिफिट, दीज आर द पर्पसेस एंड दीज आर द रिस्क. ठीक है, दीज आर द बजट बिफोर. ठीक है, आप जब उनका वो अग्री कर रहे हैं उससे पहले आप उनका इन्फॉर्म्ड कंसेंट ले लें. नाउ कम्स द एनोनिमिटी. या anonymity. You don't know the identities of the participants. Personally identified data is not collected. ठीक है, आपको इतना ज़रूरी नहीं है कि you should be familiar with each and every participant. ठीक है, आपको सिर्फ उनको एक general perspective collect करना है. It's not mandatory कि आप उनके बारे में सब कुछ जानें, about their educational background, about their age, everything. ठीक है, it's inappropriate. But if your research requires कि उसमें उनका educational बैकग्राउंड मौजूद हो, तो यू कैन आस्क देम. ठीक है, नाउ द कॉन्फिडेंशियलिटी. यू नो द पार्टिसिपेंट्स आर, बट
You know the participants are, but to keep that information hidden from everyone else, you anonymize personally identifiable data so that it can be linked to other data by anyone else. ठीक है? अच्छा आपको पता है these are my participants, they are from this department, they're doing this and they're doing that. ठीक है? You're familiar with your participants. ठीक है? But आप उस इंफॉर्मेशन को उनकी उस इंफॉर्मेशन को अनोनिमस रख रहे हैं किसी और से. ठीक है? सो दिस इज द एथिकल guideline that you need to follow when you're conducting your research. Now, the last one we have potential for harm. Acha, there are always a different ethical guidelines when you're conducting research to the from the children or to the adults. ठीक है अगर आप adults से conduct कर रहे हैं तो there will be different guidelines, and then children, because children are very, they're children ना, so there must be someone जिससे आपको पहले पूछना पड़ेगा चिल्ड्रन से के पास जाएं, बिकॉज दीज आर द थिंग्स दे वोंट बी एबल टू कॉम्प्रीहेंड कि क्या बेनिफिट है, क्या रिसर्च एथिक्स है, लेकिन पोटेंशियल फॉर हार्म. Now then comes to potential for harm. Physical, social, psychological, and all other types of harm are capped to an absolute minimum. So there won't be any sort of harm, no physical harm, no social, any sort of social harm, no any sort of psychological harm when conducting your research. Okay, so these are the all the ethical issues that you come across when you conduct your research design. So I'm going to conclude it very quickly. So the first one was voluntary participation. ठीक है, they're free to say no at any point of your research. And then informed consent. ठीक है, tell them about each and everything, but be brief. Don't exaggerate it. Don't reveal each and everything. Just tell them about the like उसको सिर्फ ऊपर ऊपर से बता दें these are the benefits. And then anonymity and then confidentiality. ठीक है, उनके information को आपको जो है anonymous रखना है. You won't be sharing with anyone else. And then उनको किसी भी किस्म का harm नहीं होना चाहिए, physical और social. ठीक है, ऐसी कोई रिसर्च नहीं कंडक्ट की जाए जो कि द पीपल आर वेरी रिलेक्टेंट टू टॉक अबाउट. फॉर एग्जांपल कोई भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से कोई गुजर रहा है. ठीक है, फॉर एग्जांपल, एंड इट इज़ वेरी सैड फॉर देम कि ये बहुत गुजर रहा है, एंड देन यू आर आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट दैट सर्टेन थिंग, तो वो उसके लिए एक साइकोलॉजिकल हार्म होगा. ठीक है, सो ऐसे टॉपिक्स को अवॉइड करें. फिजिकल हार्म नहीं होना चाहिए, सोशल नहीं होना चाहिए, साइकोलॉजिकल कोई भी किस्म का हार्म नहीं होना चाहिए. अगर हो इट शुड बी एब्सोल्यूट मिनिमम लेवल. बट ट्राई टू चूज द टॉपिक्स फॉर अ रिसर्च जो कि इस कैटेगरीज में ना आते हों. Yeah, so that's it for today. I hope everything is clear to you. If any question you may ask in comment section. Thank you. Allah Hafiz.